Okay, so हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। और तुम्हें टोरोडल रिंग कैसे होती है, क्लोज सरफेस कैसा होता है, आई विल इलस्ट्रेट यू। और किसका माइक टर्न ऑन है, मतलब मेरे अलावा सब बंद रखना है। So here you see एक क्लोज लूप क्या कहलाता है, क्लोज लूप इज दिस, सपोज ए कंडक्टर इज देयर, so closed loop is this, and this makes the surface. If we say that the total closed surface, suppose a conductor is there, तो कंडक्टर में एक चार्ज डेंसिटी होगा, एक ये कंडक्टर हो गया। सपोज अगर हम एक ओपन कॉइल की बात करें, एक कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉइल और एक कॉइल बना रहा एक कंडक्टर है, ठीक है। तो देयर इज सर्टेन एरिया, ओके, तो ये दिस एरिया इज क्लोज्ड, सपोज दिस कॉइल इज external circuit is closed here, so this closed coil is closed surface, okay. So this is here in this surface, J is there, charge density, okay, current density J and charge density D. So here this is the overall, this conductor is a closed surface, and if you make current to flow in this conductor, a flux density V will emerge out, okay. So this is the representation. So ultimately we find that the magnetic field intensity H and its line integral is equal to the surface integral of the current density. So this relates to the Maxwell equation, relates the magnetic field to the electrical currents, okay. So how much magnetic field is generated in any coil, that is given by the current density in that conductor, okay. So this is complete equation, Maxwell equation, and also here it is represented that the surface integral of the flux density is 0. So here as you can see, if any coil is there, so all the flux which is going outside from this coil
Okay, all these coil, these fluxes will from any path they will return to the coil. Okay, clear? Suppose some fluxes are going in infinite, okay, and it goes to some magnetic dipole in the infinite. So also imagine that some fluxes that are traveling from infinite may reach this. So overall we can see that these fluxes are very less numbers which are going in the infinite, and these fluxes which are coming from the infinite are also very less. So this does not make the sufficient quantity of overall flux, and we can assume that overall uh, flux which is going outside and coming inside is equal. Okay, clear, students? Please respond. So here you can see that the current density is major source for the magnetic flux density and magnetic field. Okay, magnetic field or magnetic field intensity are same terms, and flux density and magnetic field intensity is different term. Okay, so you should clearly understood what are the terms: current density, charge density, magnetic flux density, magnetic field intensity, electric field intensity. Okay, now you come to the next point. Here we can see that the magnetic flux density is the conserved, and total flux, there is no storage of the flux, uh, and it is assumed that monopole charge is not existing. Monopole uh, charge or monopole magnetic field is not present. Okay, so magnetic field quantities can be determined by the instantaneous values of the source currents. Whatever the current will be at the instantaneous time, that will uh, replicate to the magnetic field. If we are changing the current in the circuit with high frequency, the magnetic flux density and magnetic field will also change with high frequency. Okay, so, such as you have seen some converters and ferrite cores, and in that converters we are changing the currents each time, and the according flux will also change each time, even it is at very high frequency. The time variation of magnetic field follow directly from the variation of source. Here you can see that how the flux is generated. Either it can be generated from a magnetic dipole, or it can be generated using a solenoidal coil, and inside a, a solenoidal coil we insert a current by some voltage source. So here you can get the uh, flux emerging out of this coil. Here you have the flux emerging out of a magnetic dipole. So clear? This shows these two figures show that the magnetic field is conservative. And now we come to the magnetic circuit. Magnetic circuit has the main parts, which has high permeability material, and one maybe the air or low permeability magnetic material. So what is the high permeability and low permeability? The permeability of the conductor is same as the conductivity of a metal. Suppose if current easily passes through any material, suppose it can be metal, or it can be conductor or semiconductor. So if there is no any resistance, limited resistance, then
the conductivity of the material is high. In the same manner, if the flux passes from a magnetic material easily, then the permeability of the magnetic material is high. Okay, and the resistivity is very low. So resistivity and permeability are exactly reciprocal to each other. So here you can see that there is only one type of magnetic material in the figure. Can you see? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So okay, so high permeability magnetic material is here, and it has the rectangular type of core and a window there. Okay, so you can have the uh, कोई इसको ओके करो जो लॉबी में है. Okay, so now you can see that we have provided a flux current from this external voltage source, DC voltage source. So a flux will be set up in the n windings of the coil, and it will travel all the magnetic material and again come to the coil. So here also you can see that this is the conservative, and a cross section area AC is given here, that the overall cross section of this, and a mean length of the core is that. Here you can see that the if we take the outer side length of the core, that will be higher. If we take the inner side length of the core, it will be lower. So what is the total path traveled by the magnetic flux lines is assumed that the flux is passing through the center of this core. So actually the flux lines are distributed whole along the cross sectional area, but we will assume that if the we take the average of the both lengths, inner length and outer length, so this is the mean core length LC, and because this permeability of the magnetic material is mu, and this is only one type of material, so this is taken as uh, mu. Okay, and we can see that the permeability of the magnetic material, this is ferrite core, suppose ferrite core or iron, it is very higher than the air. Air has very low permeability. Okay, so it will try to limit the flux. Okay, so here various assumptions have been made that the cross section is uniform throughout the traveling path, and here, so flux density travels in the uniform cross section of magnetic material, and total coil number of turns in the coil is n, and the current set up from the external source is I, then the overall uh, mmf set up by the magnetic circuit is ni. So here you see that the total flux crossing to the any area of the core is integral surface integral of b dot b, surface integral of b along that area. So here you can see that this is equal to flux. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फॉर द क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस क्या है? Here you see the closed surface. क्लोज सरफेस में अभी अभी हमने बताया था, ये कौन सा गया है? Here you see that this is the closed surface for the flux, same as this is the core closed surface for the current. In the same manner, this is the closed surface for the flux. Means
total surfaces are traveling in a line, ठीक है। ऐसे ही क्लोज लूप क्या कहलाएगा, क्लोज लाइन सपोज ये है एक, ठीक है, ये क्लोज लाइन है। ऐसे ही क्लोज सरफेस क्या होगा, ये जो है एक लाइन के थ्रू पूरे ट्रेवल करेगा ये एरिया, तो दिस इज क्लोज सरफेस। ओके, सो here you see that in closed surface the total flux is conserved, no flux is stored there, while this equation shows that the whatever the flux is crossing to any particular area, ठीक है। You can see here the a circle symbol is there here, closed surface, okay, and this is written as, this shows closed surface. So now if we take that incremental, the integral of incremental area dA along the whole surface is total area, okay. Suppose here how we proceed, suppose this is the area and one of the small part of this area is suppose you have suppose you take the small area, this is 4 and this is the area from which total fluxes pass, okay. So this is a incremental area dA, ठीक है। तो dA जो है, अब ये पूरा जितना भी एरिया है AC, this will be integral surface integral S of dA, okay. So here you can see overall area is replaced in place of surface integral of dA like this. So now it is related that the MMF acting on the coil, acting on the magnetic circuit is equal to Ni. That is also the MMF is given by the closed line integral of मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये एक तरह से क्लोज इंटीग्रल है, ओके, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा दैट इज रिलेटेड to the current in the coil and number of turns will be higher, then MMF will be higher, okay. And if we increase the current in the conductor, current in the coil, then the magnetic field intensity will also increase. So this is the L, length of the total length of the magnetic circuit, okay. Now what is the direction of magnetic field? The direction of magnetic field is represented by the right hand rule, okay. तो राइट हैंड थंब रूल, इसमें दो चीजें हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो फ्लक्स लाइंस कैसे, you thumb represents the direction of current. So if you turn your fingers in around and your thumb represents the direction of current, then the direction of flux lines will be represented by the rounding fingers, okay, the direction of rounding of fingers. तो आप राइट हैंड रूल आप वो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जब भी करंट फ्लो होगी तो फ्लक्स लाइंस कैन बी गिवन बाय this, okay.
Similarly, if you have some current in the direction of a coil, current in the direction of rounded fingers, then what is the direction of the flux? This is also given by the same thumb rule. So here you can see that the thumb represents the direction of flux, and here the similarity of these flux lines and current is also given in a coil. So this represents for a single section of conductor, while is this represents the large number of turns of a conductor are made of solenoidal coil. Okay, so you can see here, स्टूडेंट्स आप इससे क्या समझते हैं ये दोनों? चलो कोई एक बताओ, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस? अभिजीत सिंह, तुम बताओ, चलो क्या देखे इसमें तुम? अभिजीत सिंह, आर यू देयर? हम बीच में अटेंडेंस लेंगे, फिर अगर कोई नहीं मिला तो फिर समझ लेना, आप लोग बस चालू करके चले जाओ, है ना? काम करते रहो, रिकॉर्डिंग तो हो ही जाती है, तो हम डाउनलोड कर लेंगे। क्या देखे तुम? हमने क्या बताया, इसे क्या समझ में आता है? चलो टर्न ऑन करो वीडियो कैमरा। बताओ, टर्न ऑन करो वीडियो, बताओ डायरेक्टली हमें करके कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे फ्लक्स रिप्रेजेंट, कैसे करंट रिप्रेजेंट करेगा। नहीं बनता? एनी अदर स्टूडेंट who can give the answer? कोई और स्टूडेंट जो आंसर देना चाहता है? सुचिता जैन, चलो बताओ, टर्न ऑन करो और बताओ कि कैसे ये डायरेक्शन ऑफ करंट और ये फ्लक्स हम थंब रूल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करके दिखाओ लोगों को। सर सर जैसे अगर करंट हमारी स्ट्रेट लाइन में है, तो जब हम अपने थंब को हम करंट के डायरेक्शन में करेंगे और फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो करके दिखाओ, स्टूडेंट को करके दिखाओ, वीडियो टर्न ऑन करो, स्टूडेंट्स को करके दिखाओ कैसे हम थंब, राइट थंब को करते हैं। चलो इसे प्रैक्टिकली करके दिखाओ बाय थंब। सर जैसे इस डायरेक्शन में हमारा करंट है, तो इस डायरेक्शन में करंट है लेफ्ट हैंड साइड, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स, हाथ का पूरा इमेज नहीं आ रहा। हाँ बताओ। तो जैसे लेफ्ट इधर एक जिस साइड में हमारा करंट है उस तरफ हमारा थंब जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी तो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे अगर इसमें जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर जिस केस में अगर करंट हमारा अगर जैसे लूप में चल रहा है, तो जैसे अगर ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे ऐसे क्लॉकवाइज में हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रेट लाइन में आएगी इस लेफ्ट साइड। ओके ठीक है, टर्न ऑफ करो। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया? नाउ यू कम टू दिस पॉइंट, द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is
directly proportional to B is directly proportional to H. So the flux density setup in a magnetic circuit is related to the magnetic field intensity we are setting by the external current. So H into L is equal to Ni. So you can also replace here mu into Ni upon L. Okay. So there are different lengths of the different material, then L1 and L2 may be different. So total flux setup using that current is related to the current. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक field intensity is related to magnetic flux density by some permeability mu. Okay, so permeability is the reciprocal of the reluctivity of material. Clear? Reluctance and reluctivity, permeance and permeability. तो परमेबिलिटी एक स्पेसिफिक होती है एंड परमियंस पूरे मटेरियल का होता है। रिलक्टेंस स्पेसिफिक रिलक्टेंस पूरे मटेरियल का होता है और रिलक्टिविटी एक स्पेसिफिक होती है। ऐसे ही रेजिस्टेंस पूरे मटेरियल का होता है एंड रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक, कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक एंड कंडक्टेंस इज फॉर ओवरऑल लेंथ। ओके, तो ये हम नोट करके रख सकते हैं। म्यू 0 इज इक्वल टू 4.2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ओके, एंड द flux density is represented in the terms of flux per unit area. Okay, so flux is given in Weber. So Weber per meter square is the unit for SI unit for flux density B, and also Weber per meter square is called the Tesla. Okay, similarly, if we have mu equal to 2 Henry per meter and then divide Weber per square meter or Tesla meter per Henry. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, द यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आप ऐसे निकाल सकते हैं। हाउएवर इट इज रिलेटेड टू Ni upon L, तो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, Ni MMF Ni इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl, तो HL हो जाएगा। HL का मतलब होता है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू लेंथ। तो Ni इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू लेंथ, तो आप वहां से आप निकालोगे तो एम्पियर पर मीटर। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट इज एम्पियर per meter. Clear? So here there is a range of relative permeability is given, that is varies from 2000 to 80,000. Now you come to the circuit with a air gap. So here total MMF is given by this HL, H integral L, okay, integral of dl, H into integral of dl। तो H जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक मटेरियल में है और जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में है, एयर में कुछ फ्रिंजिंग होगा, एरिया चेंज होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इंटेंसिटी एयर में कम हो जाती है और
मैग्नेटिक मटेरियल में इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो सेम एमएमएफ के लिए, इसीलिए हमें एयर गैप में अगर ज़्यादा फ्लक्स रखना है तो वी हैव टू इंक्रीज द करंट टू हायर वैल्यू। ओके, ऐसे ही ट्रांसफार्मर में होता है ना कि मतलब एयर गैप जब भी रहेगा तो हमें उतना ही फ्लक्स डेंसिटी से no air, then in the lower value of current the same flux density can be set up. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल एमएमएफ इज द इक्वल टू द एमएमएफ बाई द एमएमएफ इन द होल ऑफ द कोर मटेरियल and MMF in the air gap. This is same as the resistance, two different resistances applied between a single voltage source. तो अगर सिंगल वोल्टेज सोर्स के बीच में दो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, R1 R2, तो द सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द ड्रॉप बिटवीन R1 एंड ड्रॉप बिटवीन R2, ऐसे ही होगा ना स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यहाँ भी वही नियम लग रहा है कि Ni, टोटल Ni दैट इज गिवन बाय सेटअप बाय द सोर्स, Ni इक्वल टू HCLC प्लस HGLG। तो एयर गैप लेंथ सपोज KLG है, या यहाँ पे G भी रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये हो जाएगा। नाउ यू कैन change replace this HC. How you get the HC while you have only the information of the flux density and flux? तो आप वहां से रिलेट कर लेंगे कि HC in the core is equal to the magnetic flux density divided by the permeability of the core. ओके, तो कोर की परमेबिलिटी क्या होगी, म्यू जीरो म्यू आर, या तो अगर म्यू रख दो तो म्यू इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर होता है, ठीक है। ओवरऑल म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हियर यू कैन शो आल्सो दैट द म्यू इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर, तो एक एयर का मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी, तो चाहे एयर से मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव परमेबिलिटी का, या तो ओवरऑल मेन एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल दैट इज म्यू। यहाँ समझ में आ रहा है क्या हमने किया, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, इंटू द एलसी प्लस बीजी अपॉन द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी बीजी अपॉन म्यू जीरो। हियर देयर इज नो एनी relative permeability because we are talking about the mu zero, the air or the vacuum. So here mu zero is the permeability of the vacuum or air. So here you see that the G is length of the air gap. So total MMF Ni is equal to this. Clear? Now you can see that if we replace the BC equal to the phi upon area of the flux passing through this magnetic material, phi upon AC, ऐसे ही BG क्या कहलाएगा, phi upon AG। AG का मतलब हुआ एयर गैप एरिया, जितने में एयर गैप सामना करता। सपोज ऐसा होता है कि सर आपकी वॉइस बीच बीच में बिल्कुल पार्ट ऑफ डायरेक्ट कनेक्ट है कुछ, सर वॉइस नहीं। सो हियर दिस इक्वेशन यू कैन अंडरस्टैंड। सर वॉइस चली गई थी। हेलो, जस्ट कैन लिसन। सर एक्चुअली बीच बीच में आपकी वॉइस, अच्छा अभी जो है अभी समझ में आ रहा है क्या? अब उसका क्या कर सकते हैं, ये सब नेटवर्क का इशू होता है। तो अभी समझ में आ रहा है क्या, अभी आवाज कैसी है? अभी ठीक है सर।
हाँ, तो अभी अगर ठीक है तो ये बताइए कि अभी जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन HClC प्लस HgG इसको रिप्रेजेंट किया, ये समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। यस सर। सेकेंड इक्वेशन BC अपॉन म्यू इंटू LC प्लस BG अपॉन म्यू 0G, ये समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। Now you have replaced BC from phi upon AC, and you have replaced the BG, the flux density in air gap. So flux upon area of the air gap. So now you take the phi common, because phi is the same flux which passing through the magnetic material as well as passing through the air gap also. तो यहाँ पे आपने L अपॉन म्यू AC एंड G अपॉन म्यू 0 AG, ये रिलक्टेंस है. दिस इज द रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप. You can see by arrow, I am moving the arrow. You can see the reluctance of the air gap, and this is the reluctance of the core material. Total length LC. Total length of the core material is, in this case, this length, this mean length plus this mean length plus this mean length plus this mean length plus this mean length. Okay, clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So here this is the BC equal to phi upon AC and BG upon phi upon AG. This is also shown here. You can see that these two reluctances are given here. We are replacing now. So total MMF Ni set up by current I in n number of turns in the coil is equal to phi into reluctance of the core and reluctance of the magnetic material, reluctance of the air gap. So the overall flux can also be calculated. So Ni upon the total reluctance, Ni upon total reluctance. Okay. So main to identify the flux in the magnetic circuit, we can replace MMF by Ni upon, and we can determine the reluctance of the magnetic circuit. So here you have the analogy between the electrical circuit and magnetic circuit. Here source voltage V is there. You have the current I, which is going inside the series connection of R1 and R2. So the current in the this resistances is given by V upon R1 plus R2, and the drops, individual drops, the sum of individual drops is equal to the source voltage. Similarly, here you can see that MMF F is equal to phi into RC plus RG. This is the series combination of reluctances, and the individual, the sum of individual MMF, that is HC into LC and HG into G. The sum of both of these MMFs is equal to total MMF set up by the source. Okay. So in the same manner as the current in the electrical circuit, there is the flux in magnetic circuit. The voltage in the electrical circuit is similar to the MMF in the electrical magnetic circuit. Similarly, the voltage drop in the resistance is similar to the MMF drop in the core materials. Okay. So is it clear now? Yes Yes sir. sir. So Yes, sir. I will stop. Yes sir. Yes sir. If you are able to understand whole of the lecture, you please give the feedback in 2 or 3 minutes, and I will close them.